अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम रिव्यू करने जा रहे हैं मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की न्यूएस्ट लॉन्च को। मरियम ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 4 सिंगल ब्लशेस। सो आज हम इसको फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे, स्वॉचेस करेंगे, टेस्ट आउट करेंगे, रिव्यू करेंगे, लाइक यू नो दी होल 9 यार्ड्स। सो बहुत कुछ है कवर करने वाला। सो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा स्पॉइलर दे दूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो देयर मे बी अ सरप्राइज फॉर यू एंड यू माइट बी एबल टू गेट योर हैंड्स ऑन अ कपल ऑफ शेड्स फ्रॉम हर कलेक्शन। सो चले कोशिश करेंगे ये वीडियो पूरी देख सकें। एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। अच्छा जी, लाइक आई सेड 4 डिफरेंट शेड्स में इसने ये ब्लशेस लॉन्च किए हैं। आई हैव ऑल 4 ऑफ देम राइट हेयर विद मी। और आज हम इन चारों को अपने चेहरे पे लगा के देखेंगे, लाइक मेरे चेहरे पे लगा के देखेंगे, स्वॉच करके देखेंगे। बट हम स्टार्ट करते हैं प्राइस से, इसलिए क्योंकि द लास्ट टाइम प्राइस वाज लाइक द बिगेस्ट, लाइक इट वाज समथिंग जिस पे लोग बहुत गुस्सा थे। सो जब मैंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था ऑन मरियम परवेज़ आई शैडो पैलेट विच आई लिंक अप हेयर, उसमें मैंने बोला था कि आई होप मरियम का ब्रांड ऐसा ब्रांड हो जो लोगों के फीडबैक को इन कंसिड्रेशन ले अपनी फ्यूचर लॉन्चेस के लिए। एंड आई रियली थिंक कि मरियम ने इस बात पे लाइक गौर किया है। नॉट दैट मेरी बात पे गौर किया है, बट लाइक इन जनरल शी हैज़ एक्चुअली टेकन इन टू अकाउंट लाइक द रिएक्शन ऑफ द पीपल। क्योंकि जो ब्लशेस की प्राइस है दैट्स लाइक सो मच लोअर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, सो मच लोअर देन ऑल अदर पाकिस्तानी ब्रांड्स में। आपको लाइक दीज ब्लशेस आर रिटेलिंग फॉर 650 ईच एंड कंपेयर्ड टू ऑल अदर पाकिस्तानी ब्रांड्स आपके पास सैफायर के ब्लशेस हैं जो कि 1490 के हैं, ब्लशेस के ब्लशेस हैं 1150 के, गुरेंजा सतरंगी का बेक्ड ब्लश इज़ अराउंड 1400 रुपीज़। कंपेयर्ड टू ऑल ऑफ दीज आई थिंक कि बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं मरियम परवेज़ के ब्लशेस, as long as the product is good. I mean, it's such a good price. Like 650 is a really good price. मैंने उनके नहीं चेक किए मिस रोज़ और एसेंस, but I think it's going to be closer to that. And there's nothing wrong with that. Obviously, the more people can enjoy her product, the better. लेकिन coming from a 4,000 rupee palette, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में was the most expensive one, I think it's like such an improvement as far as price goes. That being said, I also want to comment on cost per gram, इसलिए क्योंकि जब लोग प्राइस देखते हैं तो they just look at the damage to the pocket, यानी कि मेरी जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं ये प्रोडक्ट लेने में। लोग इस चीज़ को ध्यान में अक्सर नहीं रखते, स्पेशली विद मेकअप प्रोडक्ट्स के इसके अगेंस्ट मुझे क्वांटिटी कितनी मिल रही है। क्योंकि इवन दो पिक्चर्स में चीज़ें बड़ी लगती हैं, लेकिन ये पिक्चर्स में देख के भी पता चलते हैं कि दे आर लाइक वेरी मिनी ब्लशेस। तो ये छोटे ब्लशेस हैं दैट आर रिटेलिंग फॉर 650। इनके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है जनाब 4.8 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 650 के अगेंस्ट, वेयर एज दिस इज़ अ सैफायर ब्लश, इसमें आपको 11.5 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलता है एंड दीज रिटेल फॉर 1490। बाय द वे, मैंने आपको जितनी प्राइसेस अभी बताई हैं देर ऑल फुल प्राइसेस, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं मरियम के प्रोडक्ट की फुल प्राइस से। सो ये लाइक 11.5 ग्राम्स के लिए 1490, 4.8 ग्राम्स के लिए 650। सो अगर हम इस तरह कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस आर वेरी कंपेरेबल। लेकिन आई थिंक मरियम के पार्ट पे दिस इज़ अ मच स्मार्टर चॉइस, क्योंकि लाइक आई सेड लोग ये नहीं देखते कि मुझे प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, लोग ये देखते हैं कि मेरा डैमेज टू द पॉकेट कितना है, मेरी जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं उसका एक प्रोडक्ट लेने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ मच स्मार्टर चॉइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजिंग पे। सो पैकेजिंग बड़ी क्यूट सी है, इट्स लाइक पीच ग्रेडियंट। पैकेजिंग के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा आपको जिस कलर का अंदर ब्लश होगा उस कलर का स्टिकर लगा हुआ है। सो दैट्स अ नाइस डिटेल देयर एज वेल। इस दफ़ा पैकेजिंग के ऊपर मेंशन्ड है कि दिस प्रोडक्ट इज़ मेड इन चाइना, विच आई रियली अप्रिशिएट। लास्ट टाइम मेंशन नहीं था। द प्रोडक्ट क्लेम्स टू बी क्रूल्टी फ्री, रिसाइक्लेबल पैकेजिंग है और प्रोडक्ट की जो एक्सपिरेशन है वो 24 मंथ्स है, विच आई थिंक इज़ रियली लाइक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको मिल रहा है। वैसे तो ये कि पाउडर प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लाइक टू द डेट चलते हैं, अगर आप एक्सपिरेशन को फॉलो करते हैं जैसे करना चाहिए, तो 2 साल तक आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड गिवन द साइज़, अगर आप लाइक 1-2 ब्लशेज़ ही हैं आपके पास, तो आई थिंक यू माइट इवन यूज़ दिस अप। चले जनाब, वी शुड फाइनली स्टार्ट लुकिंग एट द शेड्स, क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा है। सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग इनके साथ। सबसे पहले स्वॉचेस कर लेते हैं, फिर फेस एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं एंड देन वील रैप अप दिस वीडियो विद सम फाइनल थॉट्स। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम अपने आई शैडो वीडियो में यहाँ पे स्वॉचिंग की थी, तो अ कपल ऑफ पीपल वर लाइक कि यहाँ स्वॉचेस नहीं करते, यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड या कलाई पे स्वॉच किया जाता है। एंड आई डोंट एग्री, इसलिए क्योंकि आपका जो चीक्स का या इवन आईलेट्स का टेक्सचर है दैट्स द क्लोजेस्ट टू दिस। ये जो बोनी सा टेक्सचर है दैट रियली डजंट रिप्रेजेंट योर
your eyes or your cheeks. So हम यहीं पे swatch करेंगे. I'll start with the shade Brown Sugar. Packing like it's nice. It's not super luxurious और आप इस price पे expect भी नहीं कर सकते बहुत luxurious packaging. It's plain like transparent plastic, but it seems like good plastic, like बहुत cheap plastic नहीं लग रहा है. And it like reminds me of Essence की packaging. I had a blush Essence का that's like almost the same packaging. So we'll start with Brown Sugar, and if you can see, maybe Brown Sugar has a little bit of like glitter in it. बहुत छोटा छोटा बिल्कुल like finely milled से sparkles नज़र आ रहे हैं. The texture is really smooth. I like it. And I am going to like एक और बात ये कि I am going to blend it out a little bit, इसलिए क्योंकि कोई भी product eyeshadow like highlighter blush किसी भी product को you just don't do this and leave it, you blend it, you know. So हम इसको भी हल्का सा blend करके देखेंगे how it blends out. So जो sparkle है it like translates into this really soft shine. एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस ब्लश के बारे में वो ये कि ये बिल्डेबल ब्लश लग रहा है मुझे. मैंने एक ब्लश पे वीडियो बनाई थी, आई लिंक इट अप हेयर. आई शेडो के बारे में आप कह सकते हो कि पिगमेंटेशन हो तो क्या ही बात है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में तारीफ़ करने का सबसे पहली बात ये होती है इट्स सो पिगमेंटेड. ब्लश और ब्रॉन्जर ऐसी चीज़ होती है दैट उसके लिए दिस इज़ नॉट लाइक ये तारीफ़ वाली बात नहीं होती. अगर आपका ब्लश या ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो तो उसकी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं. सो एक अच्छा ब्लश वो होता है जो बिल्डेबल हो, जिसकी राइट ऑफ द बैट पिगमेंटेशन नॉर्मल सी हो लेकिन यू कैन बिल्ड इट अप. सो दिस डज लुक लाइक दैट टू मी. इट लुक्स लाइक अ ब्लश दैट यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप. हाथ पे like it's a very soft subtle natural shade, so मुझे नहीं पता कि how good of a like impression you're getting from this swatch, but I personally in person think कि ये बहुत खूबसूरत blush होगा. And इस तरह के shades generally speaking peachy shades are my go-to shades for blush. That and ये cool tone pinks पिछले 2-3 साल से like these kinds of shades have been my go-to shades as well. I really enjoy them. So चलें अब इसको ही swatch करके देख लेते हैं. I cleaned my hand टिश्यू के साथ. आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिफरेंट फिंगर नाउ एंड अगेन 2-3 दफ़ा swirl करके दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक ऑन माई फिंगर. आई रियली लाइक द फैक्ट कि दीज आर नॉट लाइक सुपर पिगमेंटेड राइट ऑफ द बैट. आई एम ब्लेंडिंग इट आउट अ लिटिल बिट. आई थिंक आप चेहरे पे ब्लशेस को ऐसे आई डोंट नो ये वाले स्वॉचेस कितने हेल्पफुल हैं, लेकिन इन पर्सन प्रोडक्ट जज करने के लिए यही वाले स्वॉचेस हेल्पफुल रहते हैं. आई विल मे बी डू लाइक रेगुलर स्वॉचेस एंड इंसर्ट क्लोजअप्स, लेकिन दिस इज़ द शेड क्रश राइट हेयर. ब्यूटिफुल शेड और वाकई प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला लग रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. चेहरे पे लगा के ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल से बता सकूँगी, लेकिन सो फार सो गुड. अच्छा, सो अब ये जो नेक्स्ट शेड है वेल बीइंग, ये मुझे लगता है इसकी कलेक्शन का सबसे यूनिक शेड है. इस तरह के शेड्स पाकिस्तान में आपको बहुत सारे ब्रांड्स नहीं नज़र आते जो इस तरह का शेड निकालते हों. तो इस तरह का ब्लश हैज़ अ यूनिक वैल्यू इन द सेंस के यू कैन यूज़ इट एज अ ब्लश ऑन इट्स ओन, and you can also maybe mix it in with other blushes and create a whole new different warmer shade. So इसको भी जनाब swirling it around, and very honestly speaking जो मरियम की कैंपेन वीडियो है of these blushes उसके अंदर when she is applying them तो वो इतने harshly apply हो रहे हैं कि I did expect these blushes to be over the top pigmented, but I think कि वो brush जो यूज़ कर रही है blushes apply करने के लिए वो बहुत ideal brush नहीं यूज़ कर रही. अगेन जो ब्लश वीडियो मैं ऊपर लिंक करूँगी उसके अंदर आई टेल यू कि ब्लश एप्लीकेशन के लिए बेस्ट तरह का ब्रश किस तरह का होता है. आई डोंट थिंक शी इज़ यूजिंग अ वेरी नाइस ब्रश फॉर द ब्लश एप्लीकेशन. बट एनीवेज आई हैव दिस कलर blended out right here. Again, it's very pretty. I really like it. The only shade that I am slightly scared of, मुझे लगता है कि this would be a little too pigmented, या would not be like थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. दिस इज़ द शेड जस्ट वाओ, एंड अगेन अ वेरी यूनिक शेड वाटरमेलन. रेडिश हिंट्स आ रहे हैं इसमें, मोस्टली अ वाटरमेलन शेड. अगेन नॉट अ शेड जो आपको पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स के पास नज़र आता है. सो आई एम स्वॉचिंग इट. दिस इज़ एन इंटायरली मैट शेड. सिर्फ ब्राउन शुगर में आपको थोड़ा सा स्पार्कल नज़र आ रहा है, बाकी सारे blushes are completely matte, and this is definitely like darker than the rest of them, लेकिन I think it would still be like wearable अगर आप like
if you take the precautions, if you like dust off the excess pigment या अपनी हथेली पे या किसी टिश्यू पे, you can make it work. It's a beautiful color, लेकिन मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. So anyways, let's start applying these on the face. I'm very excited. Let's jump right into the first impressions and testing them on my face. अच्छा जी, I'm starting off with the shade Brown Sugar. इसको मैं यूज़ करूँगी as bronzer on the perimeters of my face. जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो जनाब जैकलिन हिल और मोर्फी के कलेक्शन में से JH07 है. I'm picking this up, tapping off the excess. Like I definitely think I picked up a lot of product. So अब मैं I like take a tissue, I'll tap off the excess. जो भी मज़ीद पिगमेंट रह गया है ब्रश के ऊपर, आई एम जस्ट टेकिंग दैट ऑफ. ब्रश को हम इस तरह से क्लीन इसलिए करते हैं ताकि ब्लेंडिंग करते हुए मज़ीद पिगमेंट ना अप्लाई होता रहे. सो पिगमेंट सारा मैंने टिश्यू पे उतार दिया है एंड आई वांटेड अ क्लीन ब्रश टू ब्लेंड इट आउट. It's a nice shade. It's definitely warmer than your regular bronzers. So I would personally use it as blush, but I think it is like giving me some definition. Like compared to my other cheek, it is like doing a good job of chiseling out my cheekbones. Like it's actually doing a pretty decent job. Okay जी, so that was Brown Sugar all done. इसको मैंने bronzer की तरह हर जगह लगा लिया है and I really like the shade of it. I would personally love this as a blush as well. लेकिन ये कि application wise it went on extremely smoothly. कोई like patchiness नहीं है. It's not skipping anywhere. The pigmentation is right. Like मेरे लिए blush में सबसे important चीज़ होती है the right pigmentation. Like if a blush is too overwhelming कि वो एक दफ़ा भी उसमें आपने brush रखा है तो it's like clown cheeks, तो मेरे लिए वो blush जो है वो I don't like it at all. These blushes I like because आप इसका pigment like I'm sure you can build it up. I don't want to because it's enough pigmentation for me as is. लेकिन अगर आपके deeper skin tone है and you want to build it up, I think you totally can. इसलिए क्योंकि it has enough pigment to do that. But anyways, अब हम थोड़ा सा नमूना बनने लगे because I'll apply one color on one side and another color on another side. Then I'm going to remove like the blush and apply the third color on both cheeks. That's the idea right now. So सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ जनाब ये watermelon shade Just Wow. Blush अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश ले रही हूँ Morphe and Jaclyn Hill का JH06. This is my favorite blush brush in the entire world. So I'm literally ये वाला क्योंकि ज़्यादा dark है, I'm literally going to go poop once and I think that's enough. I think that's enough. It did pick up a lot of product on the brush. अभी इसको shake off नहीं करते because सिर्फ एक दफ़ा उठाया है. So let's try that out as is. Yes, that's a lot of pigment. But let's try to blend that out now. ओके जी, सो बहुत खूबसूरती से बड़ा स्मूथली ब्लेंड आउट हो गया है. इट डजंट लुक पैची और ओवरवेलमिंग बाय एनी मीन्स. लेकिन आप लोगों ने देखा आई वॉज वेरी केयरफुल विद इट. इसको स्वॉच करके मुझे आइडिया हो गया था दिस वुड बी टू डार्क फॉर मी, सो आई डिडंट गो ओवर बोर्ड विद इट. आई डिडंट जस्ट कीप पुटिंग माई ब्रश इन. सिर्फ एक दफ़ा उसको टच किया एंड आई हैव गॉटन इनफ पिगमेंटेशन आउट ऑफ इट फॉर माई सेल्फ. तो दैट्स लाइक गुड. लाइक इस तरह के प्रोडक्ट का इसका मतलब है बहुत ज़्यादा माइलेज होगा. लाइक इवन विद लॉट ऑफ पिगमेंटेशन आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ वर्केबल एंड यूजेबल एंड रियली नाइस एक्चुअली. अच्छा, दूसरी तरफ हम यूज़ कर लेते हैं दिस वन इन वेल बीइंग एंड इसको आई टैप लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स, शेक ऑफ द एक्सेस वंस. So it is giving me this very subtle warmth on this side. इस साइड को देख लेते हैं. We'll try building it up. तो देख लेते हैं blushes buildable हैं या नहीं. I tapped into the brush one more time and I'm going to start building that up. अच्छा जी, सो डेफिनेटली प्रोडक्ट इज़ बिल्डेबल, यानी अगर आप चाहें तो आप उसकी पिगमेंटेशन लेयरिंग करके बढ़ा सकते हैं इफ़ यू नीड टू. अदरवाइज आई थिंक दीज ब्लशेज आर वेरी अप्रोप्रिएटली पिगमेंटेड
and I really like the level of pigmentation in hair. So अब मैं क्या करूँगी, I'll try to remove as much of this blush from my cheeks as I possibly can, and फिर मैं try करूँगी this blush mixed in with crush. I think this would be such a pretty combination. So इन दोनों को मैं mix करके एक दफ़ा try करूँगी, and then I'll wear crush by itself on both of my cheeks and end the video that way. So yeah, I'll like remove this blush and I'll be right back. Okay जी, so I tried my best to remove the blush. इस तरफ वाला थोड़ा सा रह गया है क्योंकि it was really dark, लेकिन इस तरफ वाला I think pretty much ख़त्म हो गया है. So what I'm going to do now is, like I said, I'm going to mix crush and well-being together. So मैं एक दफ़ा एक में tap करूँगी. I'll tap in the shade crush first, and then I'm going to tap in the shade well-being, and now I'm going to apply that. Like check that out, isn't it like this beautiful? इसमें आपको peach के hints मिल रहे हैं, pink के hints मिल रहे हैं. You have warmed up the pink ever so slightly. Beautiful combination, बहुत अच्छा लगेगा. Like this well-being, you can buy it just for the sake of mixing it in with other blushes. I just know these kinds of blushes देखने में अजीब लगते हैं, but like they have so much value because they can like make all of your other blushes very versatile. So इसके बाद जनाब, I'm just going to clean my brush one last time. उसके बाद I'm taking crush and I tapped in a couple of times, and I'm going to apply that on this side. I mean, you guys, I definitely predicted this would be my favorite blush, इसलिए क्योंकि like I said already so many times in this video, इस तरह के shades are my go-to shades to wear. I think they're just so feminine and girly, and they just are the most naturally flushed kind of cheeks. उस तरह की look देते हैं इस तरह के cool tone pinks, and I'm like, I really like this one. So मेरा इरादा था कि मैं I'll just remove this side and then apply crush by itself before I end this video, लेकिन I think it looks okay. I mean, do you care? I think it looks okay. So I can continue filming this video दोबारा इसको remove करने के बजाय. So I'm just going to give my final comments on the blushes. I personally really like them, and I'm not just saying that from a place of like being a Merium Pervaiz follower, because I haven't watched a single video of hers in so long. Like मैं उसकी उतनी die hard ना fan हूँ ना follower हूँ. I like her, but it's not coming from a place of that. I review product as a hobby, as my potential living every single day. So I'm speaking from that perspective, and I think these are pretty nicely formulated as far as जो अच्छा ब्लश जिस तरह का होता है. ऑब्वियसली मैं दो चीज़ों पे कमेंट नहीं कर सकती. एक तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं बता सकती कि ये ब्लश कितना घंटे चेहरे पे टिकता है, क्योंकि मेकअप में सबसे पहले जो चीज़ गायब होती है वो ब्लश ही गायब होता है. सो ब्लश की लॉन्जेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो वो जब भी मैं फिगर आउट कर लूँगी कि ये ब्लश कितनी देर तक चेहरे पर टिका रहता है, तो मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट पिन कर दूँगी ताकि आप लोग पढ़ सको और आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि ये एक मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम दिस रिव्यू जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी एट अ लेटर स्टेज. दूसरा, मैं ऑब्वियसली ये नहीं बता सकती कि ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं. डिड इट ब्रेक मी आउट, डिड इट क्लॉग माई पोर्स, इस तरह की बातें ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन में पहली दफ़ा इस्तेमाल करके मैं आपको नहीं बता सकती. बट एज फार एज एवरीथिंग एल्स गोज, द पैकेजिंग, द प्राइसिंग, द फॉर्मूला, द परफॉर्मेंस ऑन द चीक्स, द ब्लेंडेबिलिटी, द लेवल ऑफ पिगमेंटेशन, the way like it applies on the skin, how smooth it is, all of that, I think मैं इसको बहुत अच्छे marks दूंगी. Like I'll rate it 4.5 or 5 out of 5. I'm very impressed with everything I saw today. And yeah, I think that wraps up my review. एक और बात, although I just said कि formulation अच्छी है, formulation definitely अच्छी है as far as performance goes and as far as what most people would care about. लेकिन अगर आप बहुत डिटेल से ingredients को देखोगे तो the first two ingredients mentioned here are talc and mica, जो कि बहुत healthy ingredients नहीं है for skin care. जो अच्छे clean brands होते हैं like Cover FX होता था, they used to not have talc or mica in any of their products. So ये skin के लिए बहुत अच्छा ingredient नहीं होता है, इसलिए जो ingredients list में सबसे पहला ingredient होता है that means कि वो सबसे ज़्यादा quantity में available है in a product. So maybe like quality of ingredients इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन the performance of product on the face is really good. So और वो ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं. Although देना चाहिए, quality of ingredients पे भी देना चाहिए, but for the most part
people really care about the price and how it performs on the skin and all of that. So उस सारे हिसाब से I think it's a really good product. And ज़्यादातर products जो market में मिलते हैं at this price point, उनमें आपको यही formulation मिलेगी. इससे बेहतर formulation जो clean products हैं वो फिर महंगे भी होते हैं obviously. So yeah guys, that wraps up my thoughts on the new Merium Pervaiz के blushes. I think first impression wise, I really like these blushes and I would recommend them. I think a lot of people can enjoy these blushes, which is why I decided to get a few extra ones to give back to you guys. So I got two of the shades. एक मैंने लिया है जनाब brown sugar and एक मैंने लिया है crush. Both of these shades I'm pretty confident the majority of people are going to enjoy. Just Wow जो कि watermelon सा shade है and Well Being जो कि वो orangey सा shade है. It might not be everyone's cup of tea, but ये दोनों shades I'm pretty sure every single person, no matter what your complexion be, you are going to enjoy these blushes. And so I decided to buy these extra ones for you guys to win in a giveaway. Giveaway enter करने की details नीचे description box में भी होंगी. But it's very simple. All you have to do is thumbs this video up and comment what your favorite shade of blush in her range is. That's it. आपने मुझे नीचे comments में ये बताना है कि आपका favorite shade कौन सा है इस blush collection में से, and you would be entered in a chance to win this giveaway. So चलें जी, that was it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसने आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की हो. If you did find it helpful, then do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already, and notifications on कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो you guys can find that out. And yeah, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.